Next thing, acid dissociation constant or acid ionization constant, that is Ka. Simply it is an equilibrium constant. It is an equilibrium constant. If it is an equilibrium constant, there should be product, there should be reactant, उनका ratio. Now if I follow the Arrhenius definition of acid or Bronsted-Lowry definition of acid, if you one by one take it, H plus aqueous, H2O liquid, like this. So if I ask you what is HA, it's an acid. Since it is an equilibrium constant, it is not completely ionized, it's a weak acid. It's a weak acid. Plus it will form A minus. What is A minus? Conjugate base. Conjugate base. किसका? HA का. Weak acid का. Now जो most important learning आज की क्लास की होगी, on absolute basis किसी कंपैरिजन नहीं है. Absolute basis, conjugate base और anion एक ही बात है. Of weak acid is weak base. Now weak acid means this weak base का मतलब we are not comparing with anything else, we are just comparing the alpha. अगर weak acid is weak acid is having less than 1 alpha, the conjugate base is also having less than 1 alpha. So conjugate base or anion of weak acid will behave like what? Weak base. Solving में ये ध्यान रखनी है. अब what should be the equation? Ka equal to concentration of H3O plus A minus upon. Now do we have to take both term or only one term? Only one term, because pure liquid and pure solid के लिए we take one. ठीक है? Any issue here? Tell here. No, sir. Constant. So no need to write it. Now again I'm writing same kind of, both can work, both will give the same result. This will give H plus aqueous. Now this definition is from which concept? Arrhenius concept as H plus donor. But अब Bronsted-Lowry में क्या होगा? If acid is proton donor, तो base is proton acceptor. So here K will be written as what? H plus into A minus upon HA. ठीक है? Both are what? Same. Now tell me, if Ka is infinity, so what is left at equilibrium? 0.
If K is infinity, it means what kind of acid is what? Acid is strong. ये simply क्या बोल सकते हैं? Strong acid. That is, alpha is what? 1, which means concentration of HA at equilibrium will be 0. If Ka not equal to infinity, that is weak acid. Formula will be remaining same. You must have read in the last class. For a general weak electrolyte, this is the result. Same if I take HA, it will be H plus and A minus. Result will be same. Everything will be same. K will be replaced with Ka. ठीक है, weak acid होगा definitely. For this, alpha is less than 1 more than 1, 0. ठीक है. Therefore, HA equilibrium should not be equal to 0. अब मुझे बताइए, K infinity to strong acid. It means higher the value of Ka, value of Ka, K लिखोगे कैसे? K capital और A subscript. Stronger is the acid. यहीं पे बहुत कुछ यूज कर सकते हैं, बहुत कुछ डिफाइन कर सकते हैं. K ज्यादा होगा तो H3O प्लस क्या होगा? ज्यादा. H3O प्लस ज्यादा होने का मतलब H प्लस ज्यादा. H plus and H2O, concentration of H plus and concentration of H3O plus. सॉल्विंग में क्या लेंगे? बस H plus ही किसमें कन्वर्ट हो गया? H3O plus. ठीक है ना? अल्फा का फॉर्मूला क्या था? टुंडर K by C. फॉर एसिड अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? K by C. सिमिलैरिटी देखिए, चैप्टर लेंथी हो सकता है बट देयर इज अ सिमिलैरिटी. K increases तो अल्फा increases. H3O plus increases. H plus increases. Acidic strength increases. दूसरी लॉ देखिए, K increases, log K क्या होगा? Increases. माइनस log K क्या होगा? Decreases. What is minus log K? pKa decreases. Alpha increases. H plus increases. Same thing can write for this. तो थोड़ा स्लाइड चेंज होगा. H plus increase. Acidic strength of HA increase. सिंपल है. एनी डाउट? No, sir. तू रिकॉल करना, तू सिमिलरिटी देखिए फिर से. व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ B plus? C alpha or root Kc. Here also if I ask you what is the concentration of A minus, H3O plus, H plus, A minus, all are what? C alpha.
सभी क्या होंगे? सी अल्फा होंगे। और क्या होंगे? के सी होंगे। वो बताएंगे, बताया नहीं, ऑब्वियसली वही होगा, कुछ और नहीं। डन एवरीवन? सेम थिंग यू कैन डू फॉर बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट. बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट और बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के भी हो जाएगा बस, बाकी सब कुछ से नहीं जाने वाला. अब डिफरेंस क्या है देखिए, इफ आई टेक ओनली बी, तो बी will, and B has having a lone pair, it will form B H plus aqueous plus OH minus aqueous. But if I take BOH format base, it will dissociate to give B plus aqueous and OH minus aqueous. Now tell me, ये कैसा बेस है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस. और ये कैसा बेस है? आर्हेनियस बेस, है ना सुमित? उनका यस सर. केबी, यहाँ पे भी क्या केबी. डिफरेंस क्या आ गया? In this case, the acid is giving H plus, but here it is not happening. In one definition, base is giving OH minus. In one definition, it is accepting H plus. तो Kb क्या होगा यहाँ पे? BH plus. I will take an example also so that you will always keep in mind. BH plus upon into this. यहाँ पे Kb क्या लिखेंगे? B plus OH minus upon BOH. I will repeat again. B plus and BH plus represents, या एग्जाम्पल समझते हैं फिर लिख देंगे. ठीक, अगेन सेम काइंड ऑफ रिजल्ट जो आपने इतना कुछ लिखा है वहां भी लिख सकते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं. इफ आई टेक अमोनिया, अमोनिया इज नॉट an arenase base. अंडरस्टैंडिंग देखिए, इट विल गिव NH4 plus aqueous plus OH minus aqueous. Anything is difficult? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं. तो B किसकी तरफ हो गया? NH3 की तरफ. BH plus किसकी तरह हो गया? NH4 plus. pH plus is similar to Na plus. But if I take NH4OH aqueous, dissociate to give NH4 plus aqueous plus, again I'm repeating, this H2 is acting as a pure liquid, quantity is more, working on the dilute solution, so that's why we don't have to take in the equilibrium constant. What is this? B plus. And what is this? UH. Just compare with that. तो यहाँ पे Kb क्या लिखेंगे? Into OH minus upon NH3. Why it is happening? Because the definition is different. Bronsted-Lowry base has a definition of accepting proton. RNase base has a definition of
except giving which minus, but the problem solving, it will be same. This. ऊपर हमने एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? बिकॉज सब में ही काम है एग्जाम्पल ना. सेम. सेम. सॉल्विंग में रिजल्ट सेम ही आएगी. इसका मतलब ये हुआ KB of NH3 and NH4OH एक्वस की बात कर रहे हैं, वाटर की बात कर रहे हैं. Because NH3 is also H plus, तो H plus निकल सकता है, but it is not removing its H plus, it is accepting H plus from water, therefore it is acting as a base, proton acceptor. So KB of NH3 aqueous are considered to be same. Concentration of ammonia aqueous and NH4OH are considered to be same in problem solving. In problem solving. Can you write the same kind of result जो यहाँ लिखा है हमने? ये पूरा कॉपी कर सकते हैं वहां पे. सिर्फ करनी क्या होगी? KB है ना. उनका क्लियर है ना? हाँ सर. बताइए. कुछ टफ है ही सर नहीं. वो ऊपर का लिखना बाकी है. हाँ, एक मिनट आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं. रुकिए पहले थोड़ा समझ लीजिए. नहीं, मेरा समझाना बस ये है कि आयनिक लेंथी लग सकता है पर रिपीटेटिव है. कैन यू फिल अप दिस? यस कर सकते हैं डेफिनेटली. प्लीज राइट. सिर्फ एक लिखिएगा एसिड का और बेस का इधर कॉपी कर लीजिएगा होमवर्क. लिखिए आराम से. हो गया सुमित?
डन बेटा, हो गया? सर एक मिनट। हाँ डन सर। it similar format में just leave the one page and write everything so that you'll be having practice for that. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेवलिंग इफेक्ट and differentiating effect. If I take HI एक एसिड ले लिया और हमने एक्वस लिया, एक्वस का मतलब वाटर ले लिया, तो इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। कंप्लीटली डिसोसिएट मतलब अल्फा क्या हो गई, 1 हो गई। If I take HClO4, that is also completely dissociated. An aqueous solution, H plus N, ClO4 minus, that is also alpha 1. So in water, what is happening? In water, चलो ये इसका मतलब क्या बात लिखते हैं? What is happening here? Alpha is same. It is known as leveling effect. Leveling effect means we cannot differentiate the strength of acid. In a solvent in which acidic or basic strength of two acids the base acid की कंपेयर कर रहे हैं, दो एसिड कंपेयर 10 एसिड कंपेयर कर रहे हैं, becomes same is called leveling. Level मतलब क्या होता है?
वी आर ऑन सेम लेवल, मतलब सबकी पोजीशन क्या है, सेम है. All these strong acids which is having alpha 1, it means they are behaving as what, same acid. Effect of solvent. वहीं अगर आप सेम एसिड का, if you take example, you don't take aqueous, you are changing the solvent. Acetic acid. Acetic acid ले लिया. You will find यहाँ पे 98.98%, just data समझाने के लिए, याद नहीं करना. 99.9%. क्या ये सेम स्ट्रेंथ हुआ? यहाँ पे 100% डिसोसिएटेड था. कैसा इफेक्ट हो गया? डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ यूज ऑफ a solvent in which two acids having different strength, that effect is known as what, differentiating acid. ठीक है ना? तो if in a solvent in which acid or basic strength of two of becomes different, generally it is applicable to check for strong acid, not weak acid. Weak acid already is having different value of K, but in water Hi has infinity K, HClO4 has infinity. So how to study the difference? That this is the only way to study the difference. If two acids having different strength, it is known as differentiating acid. For acids, acid solvent are differentiating basic solvent may be leveling. Leveling effect simple means what?
डन, ये दोनों क्लियर है सबको? डिफरेंशिएटिंग के लिए अल्फा लेस देन 1 हो सकता है ना? हाँ होगा ना, तभी तो अल्फा लेस देन 1 होगा ना। अच्छा ये तो तुम, अरे ये तो कॉपी पेस्ट ना। 98.98 का मतलब ही क्या हो गया? 100 से कम, ठीक है। हाँ सर। ठीक, डन। नेक्स्ट देखिए, जो बेसिक टेक्निकल टर्म है वे सॉल्विंग पे आएंगे। सारे क्लियर हो गए? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्लियर हो गया, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, एम्फीप्रोटिक क्लास इज मोर देन एनफ, बहुत ज्यादा, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी ओनली द नोट्स प्रॉपर्ली एंड यू विल गेट ऑल द आइडिया। एम्फीप्रोटिक सब्सटेंस, what is amphiprotic? In the last class I told you, which can, एम्फी का मतलब ही होता है टू टाइम, टू वेज। It can accept proton or lose a proton। Example recall करना। In the last class I give you many examples to identify which is Bronsted Lowry acid base like this. I have written this also here. I mentioned it here. Amphiprotic energy. If I talk about HSO4 minus, example, HSO4 minus, या कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। If I take HCO3 minus, example, HCO3 minus, HS minus, H2PO4 minus, HPO42 minus, HPO3 minus, so HCO3 minus property will be what? Since it's an acid, it can donate proton plus यहाँ पे किसकी तरह एक्ट किया? As an acid. Similarly, HCO3 minus aqueous, it's an anion, so it can accept what? Proton. It can accept protons. It will form OH minus plus H2CO3 H2CO2 as a base. Why it is as an acid? Because proton accept कर लिया, प्रोटॉन डोनेट कर लिया, अब बेस क्यों? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब देखिए H2CO3 कैसा एसिड है? इधर डाइबेसिक एसिड, 2H+ निकाल सकते हैं, बट इधर डाइबेसिक एसिड
it will dissociate two times. H2CO3 aqueous, CO3 minus plus plus, और क्या लिखते हैं इसको? This constant यहाँ पे Ka1, constant Ka1, both are what? Same. और the HCO3 minus form will further, सभी aqueous है बेटा, aqueous नहीं लिख रहा मतलब aqueous है, because ionic means aqueous. सर एक्वस मतलब ही वाटर एडेड है ना, हाँ, तो सेकेंड वे में वैसे क्यों लिखते हैं हम लोग प्लस H2O? तो वाटर H plus free state में नहीं रहता ना. H plus will be surrounded by water molecule. The most dominating species present is what? H3O plus. तो H plus है, that is not free. It will be always hydrated by water molecule, surrounded by water molecule. HCO3 minus further dissociate to give what? तो constant क्या लिख लेंगे? K2. CO3 2 minus aqueous plus H plus aqueous. और क्या लिख सकते हैं? HCO3 minus aqueous will accept, you will donate proton to liquid solvent. K2. These two are means same, and these two are means same. So H2CO3 is a dibasic acid. It will ionize in two steps. It will ionize in two steps. अब मुझे बताइए K1 K2 क्या होगा? What is K1 K2? Acid ionization constant. ये होगा ना, acid ionization constant. But two times होगा, तो दोनों अलग अलग. Think का आंसर which value is higher? कौन सी वैल्यू हायर होगी? Not don't rush नहीं करनी है. कौन सी वैल्यू हायर होगी? Can use the basic concepts of equilibrium and you can identify it. ये सभी को क्या कहते हैं? एम्फीप्रोटिक Amphiprotic. अनायन कहते हैं. एम्फीप्रोटिक अनायन. बताइए which value higher, K1 और K2? Think an answer. For simple, use the basic chemical equilibrium concept. You can easily tell me. Special case of amphoteric.
So both will be same. क्या Both will be ओके same. मुझे बेटा दोनों स्पीशीज ही अलग अलग है, ये कोई और एसिड है, दिस एसिड इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग एसिड है। और HCO3 माइनस में आप देख रहे हो इट हैज बेसिक प्रॉपर्टी आल्सो। जब बेसिक प्रॉपर्टी भी हो जाएगी तो डेफिनेटली थोड़ा डिफरेंस तो आएगा। क्यों आएगा उसकी लॉजिक पूछ रहा हूँ मैं। So K2 will be greater than K1. कैसे, वही तो पूछ रहा हूँ, बिना लॉजिक के आंसर मत दीजिए, अदरवाइज गलतियां तो करें। क्योंकि HCO3 ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है ना, तो वो H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो कर सकता है ना, तो एसिडिक प्रॉपर्टी कम हो गई ना। If it has a tendency to accept H plus also, its acidic property will reduce. But H2CO3 is always acid. This is not the actual reason. Reason is what? Second dissociation will take place only when the first dissociation will take place. After the dissociation of first, then only the second one takes place. Now, after first dissociation, H plus will be formed. और HCO3 के टूटने के लिए टूटेगा तो H plus बनेगा, पर सॉल्यूशन में पहले से ही H plus अगर प्रेजेंट है, if the solution is already containing H plus, its dissociation is what? बोलो, suppressed. इसके टूटने से H plus बनता, पर H plus पहले से ही प्रेजेंट है, तो इसका टूटना ज्यादा होगा या कम होगा, बताइए। कम होगा। लीस्ट एडिबल हमेशा काम आएगी, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा ऐसा मिलेगा। जनरली K1 is always greater than K2. What is common ion effect? आयंस के कॉमन होने के कारण फर्दर डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? सप्रेस हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस। सेल्फ आयोनाइजेशन और ऑटो प्रोटोलिसिस तो होता क्या, देखो H2O plus H2O will give one H2O molecule is producing H3O plus one molecule is what? OH minus. So what is the meaning of self? The same molecule behaving as what? Acid as well as base. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? NH4 plus and NH2 minus. If I take formic acid, so one molecule of formic acid is acting as acid and one is acting as a base. If I talk about water, तो यहाँ पे क्या होगा? If I consider this is acid, this is base, तो इस बेस से क्या बन गया? कॉन्जुगेट एसिड। और इससे क्या बन गया? कॉन्जुगेट बेस। Base. All are examples of self ionization. वाटर का pH क्या होता है?
7 सब जानते हैं। 7 क्यों होता है? क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है, पर फ्यूचर में पढ़ोगे कि pH 6 है तब भी न्यूट्रल होता है। तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इट इज मतलब टेकन। ठीक है, कोई डाउट नहीं? यहाँ तो कोई डाउट है, बताइए। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस सेल्फ आयोनाइजेशन वाली पार्ट सेपरेटली विल टेक फॉर वाटर एंड देन इट कैन बी गिवन फॉर अदर कंपाउंड्स आल्सो। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज में क्या है? सबसे पहला, फर्स्ट मोलैरिटी ऑफ वाटर। कैन यू टेल मी व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ वाटर? बताइए। वाटर, सिर्फ वाटर लिया। मोलैरिटी ऑफ वाटर इज, पहले मैं वैल्यू लिखता हूँ फिर सॉल्व करते हैं। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, प्योर लिक्विड्स पढ़ाया है उनका। हेलो, निशा नहीं पढ़ाया क्या? नहीं सर, शायद नहीं पढ़ा है आपने। फिर आप भूल गए। टू फाइंड मोलैरिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस, देख लेते हैं। बहुत बेसिक सा है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज यूज्ड। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सर लेकिन वो कितने मोल्स लेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ देखो ना, देखो आपको आइडिया लग जाएगा। वेरी सिंपल, डेंसिटी लिख दिया मैंने। तो डेंसिटी इज यूज्ड फॉर प्योर फाइंडिंग मोलैरिटी। नाउ आप किसी का भी निकाल सकते थे, अमोनिया का निकाल सकते थे, फॉर्मिक एसिड का निकाल सकते, बट वी आर वर्किंग ऑन वाटर। वन, सॉरी, डेंसिटी ऑफ वाटर, टेल मी, 1 ग्राम पर ml। और क्या होता है ये? 1 ग्राम पर सीसी। इसी केजी में क्या होगा? 10। तो therefore 1 ml of water contains how much gram? 1 ग्राम। 1 gram। So 1000 ml of water contain 1000 gram. Molar mass of water 18 grams. Number of moles of water will be 1000 upon 18. Molarity of water क्या होगा? मोल्स अपॉन 1। ऐसे लिखेंगे, number of moles upon volume. वॉल्यूम इन लीटर्स But if I take in ml तो मल्टीप्लाई बाय 1000। वही पुराना कहानी।
लीटर ले लेते हैं ना, लीटर अपने पास। मोलर। तो नीचे लीटर लिखा है तो डिवाइड बाय 1000 होना चाहिए ना। डिवाइड बाय 1000 क्यों होगा? लीटर 1 लीटर ना, ये देखो 1 liter of water contains 1000 grams. If you're talking about liter, it should be 1 liter contains that. B, it's a weak electrolyte. Alpha क्या हो जाएगी? Less than 1, more than 0. Next, amphiprotic nature. What is amphiprotic? Can act as a proton donor as well as proton acceptor. इसको नोट कर लीजिए। ये लिख लिया क्या ऊपर वाला? नहीं सर। कहाँ से लिखना दिशा? सर वो लिखा था ना हम लोग ने पहले, उसके बाद से सब लिखना बाकी है। बेस डिसोसिएशन ये वाला। अच्छा, बेस तो बेसिकली स्पेस छोड़ दिया बेटा। देखो आयनिक में आपको इनफाइनाइट टाइम्स मिलेगा कॉपी करना। कॉपी करना मतलब रिपीटेशन। रिपीटेशन मींस रिवीजन। आर यू गेटिंग इट? ये पूरा Yes. पेज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिए लेवलिंग इफेक्ट। So here ionic product of water, you have to write the dissociation of water. We have written in two ways. First is what? बताइए। फर्स्ट क्या है? arrhenius acid और arrhenius base. Arrhenius base. सेकंड क्या है? ब्रोस्टेड लॉरी एसिड और Bronsted Lowry base. because this H2 is giving OH minus also, it's a base also. Ka of water will be equation same. Kb of water same. Same thing we can take here also, but you have to do some changes. कहाँ changes करनी पड़ेगी? बस यहाँ this. कहीं कहीं दोनों को भी पार्टिसिपेट करा लेते हैं तो कांस्टेंट बदल जाता है। यहाँ तक डन?
बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब हम क्या करते हैं, के इक्विलिब्रियम को के इक्विलिब्रियम इनटू concentration of H2O equal to H plus into OH minus K equilibrium into H2O equal to H3O plus OH minus. Now K equilibrium into H2O. H2O concentration is about 55.55. That is constant. So you are writing Kw this or Kw H3O plus and OH this. ठीक है. Now ionization of water. Ionization of water is endothermic. एंडोथर्मिक, तो T बढ़ाएंगे आप टेम्परेचर, एंडोथर्मिक साइड फेवर होगा, एंडोथर्मिक साइड फेवर होगा तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, बढ़ेगा. K इक्विलिब्रियम बढ़ेगा तो Kw भी बढ़ेगा. Kw को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं. Kw को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं. ठीक है ना, कोई डाउट यहाँ तक बताइए. नो सर। और Kw क्या लिखा हमने, वेयर Kw इज व्हाट, K इक्विलिब्रियम इनटू H2O and K equilibrium is Kw upon H2. What is K equilibrium here? K equilibrium है क्या? I ask you, what is K equilibrium? So ionization constant of water. What is this? Ionization constant or dissociation constant of water. Yes. At constant temperature, Kw and K equilibrium is constant. At 25 degrees Celsius, Kw is equal to 10 power minus 14. ये ध्यान रखना, यहाँ तक रखिएगा, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट. सर के इक्विलिब्रियम और केडब्ल्यू में डिफरेंस क्या है? तुम्हारे सामने डिफरेंस है बेटा. K equilibrium into H2O is Kw. And what is the value of this? आज ही निकाला. Yes. If anyone asks you, if I give you Kw, find the value of K equilibrium, you can easily find it out. कोई दिक्कत ही नहीं. Kw की वैल्यू दे दिया मैंने, आप निकाल सकते हैं.
ठीक है, चलिए कल से रेगुलर क्लास है ना अपनी, हाँ आज सर, क्लास है आपका, ठीक है चलिए, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।